concepts, banking, economic sectors, and various kinds of reforms. We were also looking around how the banking system was governed by the Reserve Bank of India, what were the measures taken by the State Bank of India, and what are different kinds of banks. We also see the inflation controlling techniques through CRR, SLR, and also see the demand and supply mismatch led inflation. So means of CPI and WPI. Now looking forward to our banking classes, we see some of the small topics such as Indian Post Payment Banks. So what is Indian Post Payment Bank? It is a public sector company under the Department of Ministry of Communication with 100% equity, the Government of India, regulated by the Reserve Bank of India. It provides the quick response card. It do not give the ATM card or debit card. So remember this thing, इसे याद रखेंगे कि ये ATM कार्ड वगैरह नहीं देता है. It provides QR cards. Okay. Then it provides unique, secure, convenient way to access one's account with the need to remember PIN and password. So QR code followed by OTP is become authenticated and verification. So it become more secured and protected way for the banking transaction through post offices. Okay. Then comes the small financial sector banks. Small financial sector banks aimed at providing basic banking services to unserved, underserved section including unorganized sector, small business units, small and marginal farmers, micro and small industries, and unorganized sector entities. Unorganized sectors. It also provides services, access to small depositions. What is small deposits which can be made? Then small financial bank also provides dispersal of loans. Loan dispersal is also provided. Maximum loan size up to 10% of capital funds and single borrower 15% to a group. And minimum 50% of loan should be given up to 25 lakhs. है ना? And there is priority sector lending. 75% of total adjusted net bank credit is provided through the priority sector lending. PSLs to MSMEs and distribute mutual fund, insurance and products also. Then what services it do not covered? Small financial bank. Small financial bank do not cover the big corporation and group, cannot open the branches with prior RBI approval for the first 5 years. बिना RBI के अप्रूवल के फर्स्ट 5 ईयर के लिए नहीं ओपन किया जा सकता है. And cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities which are the actual services provided by the banking sectors, which so it cannot give the actual services. It cannot be a business correspondent for any bank criteria. So what is the criteria for it? It has minimum paid up capital which would be 200 crore credited. Earlier it was rupees 100 crore only. So now the minimum criteria is 200 crore of capital to open a small financial bank. Now promoters should hold a minimum of 40% of the paid up voting equity capital for the 5 years, and rest after which should not brought down to 30% within the given scenario. So now it has also 5 years tenure and brought down up to 30%, and with the 10 years and 15% in 15 years. वो क्या कहने का मतलब है
कि वोटिंग इक्विटी जो है वो 40% के अराउंड पार्टनरशिप वोटिंग इक्विटी होनी चाहिए। देन पेड अप वोटिंग इक्विटी फॉर 5 years 30% होनी चाहिए, एंड 10 years के लिए 30% विद इन 10 years एंड 15% in 15 years. So the partnership should be keep growing from time to time. So time to time ये partnership बढ़ते हुए दिखनी चाहिए, so that RBI can authenticate it and recognize it as a actual holding bank. Now let us see the Narasimham Committee on Banking Sector Reforms. Some of the important committees which were in news and committees that reforms the functioning of banking to prevent from NPA non-performing assets, insolvents, इन सब से बचाने के लिए NPA और इंसॉल्वेंट्स को बचाने के लिए ये जो है फंक्शनिंग रिफॉर्म की गई बैंकिंग की. सो the Narasimhan Committee first was set up by Manmohan Singh government, the finance minister of India in 1991. So 1990 में क्या हमने देखा था, BOP क्राइसिस हो गई थी, IMF कंडीशंस लागू हो गए और वी हैव टू follow in detail all the terms and conditions of the International Monetary Fund. So हमें ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा इंडियन इकोनॉमी में, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स लाने पड़े. सो अ 9-member committee was set up under the chairmanship of M. Narasimhan, former governor of Reserve Bank of India. Committee submitted its report to the finance minister in November 1991. 1991 में रिपोर्ट दे दी गई फाइनेंस मिनिस्टर को. सो ये किस फेज में हो रहा है, जब LPG आ चुका है, अब बैंकिंग सेक्टर्स को रिफॉर्म्स के लिए टेस्ट किया जा रहा है. सो दिस कमिटी विल बी सेटिंग मेनी पैरामीटर्स. नरसिम्हन कमिटी फर्स्ट प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है. सेकेंड इज द एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, एसेट्स एंड द कैपिटल्स विच आर विद द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, loans, bonds, securities, they should be improved. Then system and methods in the bank should be applied. There should be systematic banking. CRR and SLR should be same. Structural issues should be reformed. So village penetration in the northeastern region, जो कि northeastern region again becomes a challenge for the any industry to get set up. So that challenge was also revamped by the Narasimhan Committee. It put forward its focus on the scientific measurement and helping the technological upgradation in the banks. So साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जाए बैंकिंग ट्रांजैक्शन को फास्ट बनाने के लिए एंड लूसिड बनाने के लिए. After which we saw many investors coming to India through FDI, FPI or any other investors. They need to have better banking facilities so that they can transact their funds easily. So Narasimhan Committee क्या provide कर रही है, Narasimhan Committee all aspects related to structure, organization, functioning and procedures of financial system and to recommend the increments in their efficiency and productivity. तो उनकी efficiency को यानी कि daily work hours keeping the same, the fast and quick response of bank system, computers and employees should be improved. Productivity should also be improved. So the committee submitted a report to the finance minister in year 1991 and suggested deregulation of interest rate.
अब इंटरेस्ट रेट जो काफ़ी हाई होते थे 10 to 12% या डिफरेंट काइंड ऑफ रेट्स, तो उनको डी रेगुलेट करने की बात कही गई, यानी कि यहाँ भी लिबरलाइजेशन देखने को मिल रहा है. सो रिडक्शन इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, supervision of commercial bank and measures to improve the competitive efficiency in the banking system was also provided. अब देखते हैं important facts with Narasimhan ji. Narasimhan ji was an economist and governor of RBI. Economist and governor. So he appointed on August 1991 against the background of balance of payment crisis. He set up to analyze all factors related to financial system and gave the recommendations to improve its efficiency and productivity. याद रखिएगा नरसिम्हन कमेटी की मेन चैलेंज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाना. बैंक कैसे मोर कस्टमर्स को, मोर सर्विसेज को फैसिलिटेट कर रहे हैं, या कैसे फैसिलिटेशन होगा और इफ़िशिएंटली फंक्शनिंग कैसे होगी, इसके लिए नरसिम्हन कमेटी एक्ट करेगी. So second committee known as Narasimhan Committee 2 was appointed also in 1998 by Atal Bihari Vajpayee government to look into the technological aspects of banking. है ना, क्योंकि इंटरनेट शुरू हो गए थे, so बैंकिंग में इंटर बैंक लिंकेज शुरू हो गए थे, इंटर बैंक पर्सनल सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई थी. Then we see Narasimhan Committee 2 giving its report in a large manner. So Narasimhan Committee was taken with the progress review of implementation of banking reforms in 1992 and the financial institutions of India. So what was its main concern? Concern था liquidity ratio. Liquidity banks के पास किस रेशियो में होनी चाहिए जो वो लेंड करते हैं कस्टमर्स को. सो दैट लिक्विडिटी वाज kept as working capital which was equals to current assets reducing current liabilities. Current assets reducing current liabilities, that should be maintained with the RBI. Current ratio, that should be current assets that are with the bank and current liabilities. So current banks assets and current liabilities की रेशियो भी मेंटेन करनी थी. And then quick ratio of current assets minus liability upon current liability was also to be provided. So Narasimhan Committee 2 was tasked in the progress review of implementation of banking. It also has led to phase reduction of CRR and SLR. तो RBI के नॉर्म्स के थ्रू मिनिमम 22% के राउंड कुछ CRR और SLR 30% के राउंड कुछ रखना पड़ता था. सो उसमें भी कटौती की गई कि कीपिंग अराउंड 15% ऑफ इट, रेस्ट कैन बी यूज बाय द बैंक. सो मिनिमम CRR and SLR liquidity ratio to be maintained. So स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में गोल्ड ट्रेंचेस जो बैंक मेंटेन करते थे RBI के साथ, उसमें भी अब रिडक्शन कर दी गई. सो इट कैन गिव अप मोर गोल्ड लोन्स, है ना. कैश रिजर्व रेशियो भी रिड्यूस कर दी गई. देन बैंक्स कैन गिव एंड लेंड मोर कैश टू द कस्टमर्स. सो इट लेड आउट ties with the bank and capital adequacy ratio, speedy computerization of bank and setting up of DRT की बात आ गई. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ऋण निकासी ट्रिब्यूनल्स, ऐसी ट्रिब्यूनल्स जो कि डेट से, लोन से, ऋण से फंसे हुए मामले जो सिविल कोर्ट में जा रहे थे, तो उनको ट्रिब्यूनल्स के द्वारा क्विक रेड्रेसल, क्विक जुडिस्डिक्शंस करने की बात हो गई है यहाँ पे. सेटिंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू चेक द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ARCs की बात भी हो रही हैं. तो एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए होती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एंड
which will look at the non-performing assets criteria, which will create the overall non-performing asset scenario. So non-performing assets कैसे होते थे? Non-performing assets were those assets जो 90 days से ज़्यादा के बाद भी पेंडिंग में रह जा रहे थे. They were called as non-performing assets. तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ें हुई हैं नरसिंगन कमेटी सेकंड की रिपोर्ट में 1998. सेम टाइम हमने पोखरण 2 भी टेस्ट किया एंड वी बिकम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री. देन we move ahead and we see there was another committee called as the Damodaran Committee. The committee was set up by the central bank to look into following matters. So which were the factors of sea change level जो कि डिस्कस कर रही है दामोदरन कमेटी. दैट इज proliferation of बैंक ब्रांचेस, बैंक की शाखाओं को ब्रॉडर लेवल तक स्प्रेड करना एट सिटी लेवल टू विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल्स, ट्राइबल सेक्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, proliferation of bank branches. Second, use of technology, internet. Third, deregulation of banks, कि बैंकों की deregulation कर दी जाए. Then it should have more autonomy to look into CRR and SLR and reverse repo operations. Then there should be demographic dividend, number of people banking with available banks and having available facilities. तो उनकी penetration बढ़ानी है. तो these four factors should be kept in mind जब दामोदरन कमेटी के क्वेश्चन आएंगे. So there should be increased in the customer services, evaluation of existing system and grievance redressal also. जो भी उनकी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैं उनको ईजिली एंड टाइम बाउंड मैनर में रिड्यूस किया जाना, सॉल्व किया जाना. स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी and recommended measures for speedy resolution of complaints also. It recommends that banks should offer no frill saving accounts with certain basic facilities such as checkbook and ATM cards. What is no frill saving account? So saving accounts जो होते हैं उसके साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. And when there is a customer who is not that much efficient, so customer की वैल्यू को चेक करते हुए नो फ्रिल्स अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं. सर्टेन बेसिक फैसिलिटीज सच एज चेकबुक एंड एटीएम कार्ड विदाउट प्रिस्क्राइबिंग एनी मिनिमम बैलेंस. सो पहले मिनिमम बैलेंस होते थे ना कि 2000 रुपीज़ के नीचे का खाता नहीं खुलेगा SBI या एनी बिगर बैंक्स में. एंड दैट वाज आल्सो रिड्यूस्ड अंडर दिस दामोदरन कमेटी. दैट किसी के पास 100 रुपीज़ है या ज़ीरो बैलेंस भी है तो भी वो अकाउंट खोल सकता है. दैट वाज द मेन कंसर्न. देन कम्स द खंडेलवाल कमेटी which comes for the public sector banks revival. So public sector banks में लार्ज लोन्स होते थे, PSUs जैसे कि SBI, लार्ज लोन्स हो जाते थे, कैपिटल लाइबिलिटीज़ वेरी हाई हो जाती थी जिससे इनकी बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाती थी. वेयर द प्रॉब्लम्स विद द एम्प्लॉयज़ वाज आल्सो कीन. एम्प्लॉयज़ लार्ज टाइम तक काम नहीं करना चाहते थे. सो कंडेलवाल प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी अ ट्रेंड मैन पावर. इफ़िशिएंट बनाने के लिए बात किसकी हो रही है? एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. तो उसको बढ़ाने के लिए मैन पावर की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपरली. देयर शुड बी कैरियर प्लानिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़. देयर शुड बी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. डेवलपमेंट प्रोसेस होनी चाहिए. एंड
प्रोफेशनलिज्म इन HR wages. HR जो सैलरीज दे रहे हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए. इन द सर्विसेज कंडक्ट एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़. सो बैंकिंग सेक्टर्स को उनके एम्प्लॉयज़ के द्वारा रूल किया जाता है. एंड इफ़ दोज एम्प्लॉयज़ आर tired, those are sick, and those are not willing to work in a proper manner, then the banking structure can get collapsed. So Khandelwal committee mainly aims to training and planning of employees. So employees की development पे वर्क करने की बात हो रही है खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट के थ्रू. नाउ what we see the next is the Bimal Jalan Committee. Under the Governor Sir Mr. Bimal Jalan, who formed the under which leadership formed the Bimal Jalan Committee for new bank licenses. So अब नए सारे बैंक आ रहे थे जो फॉरेन बैंक्स भी अब इस्टेब्लिश हो गए थे 1990s के रिफॉर्म के बाद. So RBI reserve was 9.6 lakh crore and it has the budget of 90,000 crores in RBI dividends with the fiscal and excluded the transfer from surplus. It also show extra capital will help meet the fiscal deficit target. इसने क्या बोला कि एक्स्ट्रा कैपिटल जो गवर्नमेंट के पास रहेगा वो फिजिकल डेफिसिट टारगेट को मीट करेगा. एंड गवर्नमेंट हैज सॉट ट्रांसफर बिग चंक ऑफ दिस. तो गवर्नमेंट को पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहिए. देन द पैनल वाज टास्क्ड विद द एग्जामिनिंग आरबीआईज रिक्वायरमेंट ऑन प्रोविजंस, रिजर्व्स एंड बफर्स. तो ये तीन चीज़ों की बात कर रही है बिमल जालान जी. प्रोविजंस, बफर्स और रिजर्व की बात कर रहे हैं. एंड दैट वुड डिटरमाइन हाउ मच ऑफ रिजर्व कुड बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट. व्हाट मिनिमम रिजर्व कैन बी सेंड टू गवर्नमेंट to make the budgetary expenditures of government of India. So it makes the IDFC infrastructure development and financial corporations also. So बंधन बैंक और IDFC जैसे बैंक को लाइसेंस दिया गया और RBI को कोट किया गया कि RBI और फंड को ट्रांसफ़र करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. नाउ मूविंग अहेड व्हाट वी सी. What we see is the working of the banks and their performance. So 2018-90 से आप 2012-13 to 18-19 तक के डेटा को आप देख रहे हैं. You see how surplus is being transferred to the government. And rupee intervention and the open market operation helped RBI to generate record earning. Then Bimal Jalan committee recommendation that RBI 5.5% to 6.5 of its asset as a surplus और वो ट्रांसफ़र करेगी गवर्नमेंट को. At 6.5% surplus, reserve would be 11,608 crore. At 5.5 surplus, it will be 52,000 crores. So board decided to maintain surplus at the lowest end of recommendation, and transfer of surplus had been a bone of contention between RBI and government. So गवर्नमेंट हमेशा RBI पे प्रेशर डालती हैं फंड ट्रांसफ़र के लिए. क्यों? बिकॉज RBI is a statutory body under the RBI Act of 1934 and it is made to help the government in its welfare perspective. बिकॉज इंडिया कैसी है? वेलफेयर इकोनॉमी है, सोशलिस्ट स्ट्रक्चर. DPSP आर्टिकल 39. सो सेक्शन 47 ऑफ RBI एक्ट का 47 सेक्शन ही कहता है दैट प्रॉफिट्स मेड बाय RBI फ्रॉम इट्स ऑपरेशन हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हाट इज़ द बैकग्राउंड? हमने देखा 2017-18 में 10 लाख करोड़ का सरप्लस हुआ. And government stand that the RBI reserve is quite high than according to demanded transfer in the at least 1/3 of the reserve assets.
and to enable it to infuse more capital into public sector bank to meet up the Basel III requirements. RBI was opposing the move and said that the grounds it needed sufficiently amount of reserve. बिमल जालान की नई टीम बनाई गई इसी को हैंडल करने के लिए कि सफिशिएंट ट्रांसफ़र होने चाहिए थे फंड को। तो मोदी गवर्नमेंट और उसके बीच कंटेंशन हो गया। रघुराम राजन जी रिजाइन, राजन जी गेट एंग्रीड। राजन भाई बोले नो, आई डू व्हाट आई डू बिकॉज आई एम रघुराम राजन। So accordingly, the government appointed Bimal Jalan committee to sort out this problem of reviewing the economic capital framework and suggested so as the how much reserves can be transferred to the government, कितने सारे रिजर्व ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। सो इंटरेस्ट में क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन इट्स होल्डिंग द डोमेस्टिकली इशूड गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज ऑन द लोन्स गिवन बाय द बैंक, मैनेजमेंट ऑफ कमीशन ऑन द हैंडलिंग ऑफ द बोरोइंग ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, एंड रिटर्न्स किस चीज़ पे होगा? द फॉरेन करेंसी, द फॉरेक्स रिजर्व जो कि डॉलर्स, पाउंड, यूरो में कमाई हो रही थी आरबीआई की, तो उसके जो एक्सेस ट्रेजरर्स हो रहे हैं वो भी सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे। आप देख रहे हो अभी 600 मिलियन के कुछ फॉरेक्स इंडिया के पास हैं, इससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ रियलाइज्ड इक्विटी? द इक्विटी दैट आर प्रोवाइडेड टू द बैंक्स इन द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक कैपिटल में रिवाइव हो रहा है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है गवर्नमेंट को, एंड देयर इज़ रियलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑफ आरबीआई। सो देयर इज़ इकोनॉमिक कैपिटल revaluating the reserves. It is the unrealized and national profits which helps for the valuation of gold, foreign currency and foreign securities. What Bimal Jalan is saying? अब बिमल जालान की कमेटी क्या कह रही हैं? बिमल जालान कह रहे हैं कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ 5.5 to 6.5% टू बी मेंटेन्ड एज अ बैलेंस शीट, जो कि इक्विटी आ रही है आरबीआई के पास वो 5.5 to 6.5 तक के रेशियो में आनी चाहिए, एंड ओनली इट रियलाइज द इक्विटी इज अबोव 5.5 to 6.5 दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट, यानी कि इक्विटी ग्रेटर दैन 6.5 to be transferred to the government of India, and the revised framework would allow RBI's economic capital level to lie on it within the range of 24.5% to 20% of the balance sheet. So, उसने क्या किया? ओवरऑल बैलेंस शीट सिचुएशन को इम्प्रूव करने का काम कर रही है बिमल जालान कमेटी। What we see that the reserves that are to be transferred, है ना? अब हम देख रहे हैं कि the reserve of RBI represent intergenerational build-up for the 5 years, that is the government planning in the sovereignty of RBI. Hence, there was nothing wrong in it when the central bank decided to transfer the reserve to the government, and government swallowed this reserve to help meet the expenditure of the public by large. So the central bank that provides the reserve of 5.5% of minimum transfer, that is around 52,000 crores. 52,000 crores का जो कैपिटल हो रहा था उससे अगर अधिक है तो रिजर्व बैंक को नहीं रखना चाहिए, बिकॉज द रिजर्व बैंक इज बैंक ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट and it is working under the motive of the central government to do welfare of the people. वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए ये बैंक वर्क कर रहा है. सो इट इज नीडेड टू ट्रांसफर any greater capital than 52,000 crores, or if its equity is greater than 5.5%. And accordingly the RBI decided to transfer the entire net income of rupees 1.25 lakh crore
in 2018-19 to the government 1.25 lakh crore government को transfer की. So it should be transferred because it is justified on the perspective of welfare policies and welfare state in a socialist model. Now some committee and their comparison. So Gadgil and Kasturirangan committee, ये तो कहाँ से आ गई? Okay, that was made for the Western Ghats and the ecological boundaries. We will see in the environment chapter. It is not recommended. Now let us see the working structure of these banks. Now, how is the evolution of banks was done in India? Evolution can be traced out with this process. हम trace out कर रहे हैं evolution को. So first we see nationalization of empirical bank, that was SBI. Nationalization हो गया round first में 1969. Indira government leads to nationalization of bank. Why nationalization? Because banks are threatened to take money to the foreign companies, and if that loans are provided to the foreign companies or foreign nationals, it is not keen to be recovered. इंडिया में है तो NPA करके इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या सारफाइसी के टर्म से रिकवर हो सकते हैं, बट इफ द बैंक्स फ्लेड अवे इन टोटल दैट मनी कैनॉट बी रिकवर्ड. So there is nationalization round first, then comes the nationalization round 2, and what we see, the generation of private licensing to the bank. अब आगे नरसिंहन कमेटी. फर्स्ट नरसिंहन कमेटी 1990s में BOP क्राइसिस हो गई. अब गवर्नमेंट बैंक्स भी फेल कर रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक्स को आज़ादी दी गई, लिबरलाइजेशन किया गया, डीरेगुलेशन किया गया, so that private players can take part in the Indian banking industry and provide loans. Then comes the Yes Bank, कोटक महिंद्रा बैंक, और ये सारे बैंक्स तो पहले से मौजूद थे ही. UTI, IDBI, DCB, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक, HDFC. ठीक है. Then we see, then comes the नरसिम्हन कमेटी 2. नरसिम्हन कमेटी 2 ने टेक्नोलॉजिकल रिवैम्प पे जोर दिया, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी पे जोर दे रहे हैं. You also see rise of NABARD, National Agriculture Bank for Rural Development. For the rural and village-based development, we see NABARD. We see SIDBI banks for another MSME sector. Then housing sector development, infrastructure development के लिए National Housing Bank का growth हमने देखा. Then we see private bank license round second. License round 2 goes for the private sector bank, in which Bandhan Bank and IDFC banks को license किया गया in the year 2010. Then 2015 licensing round third round of private sector banks की licensing की गई. Small financial bank भी आ गए, non banking financial companies, तो वो भी हम आगे चल के देखते हैं. Then comes the Nachiket More committee. So it is very very important, as it provided that appointment of committee on comprehensive financial services for small business MSMEs plus low income chairmanship of Nachiket More. लो इनकम ग्रुप्स को, ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि स्ट्रगल कर रही हैं बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, they are producing something, then they should be provided to have this kind of facilities. It recommended that every adult above 18 years of age should have a bank account, and this account will be known as Universal Electronic Bank Account, UEBA. Then every resident should be issued an account of the time of receiving Aadhaar number on bank itself. आधार नंबर का बैंक अकाउंट के साथ लिंकेज होना चाहिए. तो हमने देखा बापू जैम टेक्निक्स,
बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड प्रोग्राम अपडेट, इसमें की आधार इंटरलिंकिंग मोदी गवर्नमेंट ने की। देन जनधन खाता, जनधन अकाउंट ओपनिंग फॉर द विलेजर्स, आधार इंटरलिंकिंग एंड मोबाइल नंबर compulsorily for the new account holders, and proposed for the creation of payment bank to provide payment services including credit, insurance, risk management products। इन सारी चीज़ों के लिए भी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है। Now we see non-banking financial companies. So non-banking financial companies is any financial institution engaged in non-banking financial activities like leasing, microfinance, chit fund, gold loans, and besides that, the providing of bonds, hire functions, insurance functions, acquisition and share, stocks functioning, credit facilities, saving and investment plans, loans, money transfer, chit fund business also. So, foreign investment up to 100% is applicable to non-banking financial companies. 100% FDI. Then CRR is not applicable to non-banking financial companies. याद रखिएगा NBFC जहाँ भी होगी no CRR, no cash reserve ratio, and SLR applicable only to the deposit taking in non-banking financial companies। जो deposits ले रहे हैं तो उनके लिए 15% की SLR प्रोवाइड SLR मेंटेन होना चाहिए एटलीस्ट ऑफ 15%। ठीक है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में हमने देखा ILNFS फेलियर, इसमें की इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि हाईवे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लोन दे रही थी, वो कोलैप्स कर गई। देयर वाज 12,000 करोड़ फेलियर, 12,000 to 22,000 crores rupees of failure seen. So there is again criticism of NBFCs. Somehow government promotes NBFCs but they do not show that much of benefit to different sectors. Now RBI report on banking trends in India. RBI provides report after time. So 21-22 years shows this report with the highlights showing that the RBI in compliance with Banking Regulation Act of 1949 acting observing for the reports is consolidated balance sheet of scheduled commercial bank registered double digit growth of 21 and 22। So double digit ग्रोथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सेकंड, द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ratio for all SCBs has improved to 5.8% from the 7.3% in 2020-2021। तो लॉकडाउन में हमने देखा था ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेशियो जो कि 7.3% थे, इम्प्रूव होके 5.8% आ गए, यानी कि NPA रिकवर्ड हो रहे हैं। NPA for all bank groups except foreign banks during 21-22, financial performing parameters such as capital buffer, capital to risk weightage, asset ratio, CRAR, CRWR, ये सारे इम्प्रूव हुए हैं। सो व्हाट इज़ द रीजन फॉर डिक्लाइनिंग NPA? अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लाइन हुए हैं, उसकी क्या रीजंस है? इट रिड्यूस द शेयर ऑफ लार्ज बोरोइंग्स। लार्ज बोरोइंग्स जो थे, बड़े बड़े लोन्स थे, उनके शेयर्स में रिडक्शन हुए हैं। एंड देयर इज लोन राइट ऑफ बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक। सो पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जो लोन है वो राइट ऑफ हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। एंड अपग्रेडेशन ऑफ लोन्स इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक रिकवर कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, private sector bank are doing upgradations, there is so much recoveries। So what is asset classification of scheduled commercial bank? scheduled commercial banks की जब बात करते हैं, scheduled bank और scheduled commercial banks, so they are working under the second schedule of the Banking Regulation Act, and
they borrow, there is borrower is repaying the principal and interest in timely fashion. So there was insolvency bankruptcy code used एनपीए को रिकवर करने के लिए सर्फ आईसी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया. अब इससे क्या रिकवर हो रहे हैं? बैड लोन्स आर बीइंग रिकवर्ड. नाउ स्पेशल मेंशन अकाउंट्स इज ज़ीरो loan principal or interest updation for 1 day to 30 days from its due date. Special mention account up to 31 to 60 days, and special mention account second, which is used for the 61 to 90 days. Then non-performing assets, uh, which are not paid, the loans which are not paid up to 90 days and above it. So NPA equals to GNPA minus provisioning. ये फॉर्मूला याद रखेंगे. NPA equals to GNPA, gross national product asset minus provisioning. Then comes the substandard asset. If NPA for less than or equal to 12 months, then called as substandard assets. And what are doubtful assets? Then substandard assets which have a little or no saving value is called as loss assets. जो 12 मंथ तक पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं वो डाउटफुल हैं, एंड जो 12 मंथ से ऊपर चले गए तो एनपीए डिक्लेयर्ड हैं और नहीं रिकवर हो पाए. इफ़ नॉट रिकवर्ड देन दे आर लॉस एसेट्स. सो लोन राइट ऑफ में क्या है? बैंक राइट्स ऑफ अ लोन आफ्टर द बोरोवर हैज़ डिफॉल्टेड लोन रिपेमेंट एंड देयर इज़ अ वेरी लो चांस ऑफ रिकवरी. देन द लोन राइट ऑफ saves money from the provisioning and reduce tax liability. लोन राइट ऑफ से क्या हो रहा है? प्रोविजनिंग हो रही है एंड टैक्स लाइबिलिटी घट जा रही है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? We see the evolution of banking system in India through this map, where in 1840s बॉम्बे में बैंक खुल गए. 1806 में बंगाल में फर्स्ट बैंक इन इंडिया. 1842 में. सो ऐसे करके ट्रेंड हो रहा है. 1806 में फर्स्ट बैंक इन इंडिया इन बंगाल, सेकंड बैंक इन बॉम्बे 1840, थर्ड बैंक इन मद्रास 1842, फोर्थ बैंक इन 1861. So there is presidency banks with the East India Company, which were providing functioning to the UAE, Saudi countries, अफ़गानिस्तान तो बना नहीं था, बट जो भी एशियन कंट्रीज थे उनको वो लोन प्रोवाइड कर रहे थे. एंड द लोन रिकवरी वाज सीन इन 2002. 1991 में क्या बन गई? नरसिंहन कमेटी फर्स्ट. बैंक्स फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहे थे तो बैंक के लिए क्या लाया गया? रिफॉर्म्स लाए गए. इफ़िशियंसी एंड फंक्शनिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए. देन RTGS वाज enrolled, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड निफ्ट आ गए ट्रांसफ़र के लिए. देन कम्स द नरसिम्हन 2 अगेन फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, training of the employees and smart functioning of banks. Banks के expansion के लिए भी promote किया गया. Then comes the financial inclusion through Prime Minister Jan Dhan योजना, किसान विकास पत्र, small banks. KVP से किसानों को लोन दिया जाने लगा. LIC came with 1 lakh accidents, 30,000 life insurance, and union government employees are there which income has tax payment not eligible. So 45 days में क्यों? क्योंकि 45 days में NPCI रुपए कार्ड यूज़ होता है एंड 30,000 इंश्योरेंस को बढ़ावा दिया गया. Then comes the classification of banks and non-banking companies. So banks are commercial and cooperative, scheduled commercial bank, public, private, foreign and regional rural banks. Cooperative banks are urban, state, central and public account bank. So all India financial institutions are helping the development of these banks which are in cooperative nature. There is PD and
non-banking financial companies. So other banking industries are Exim Bank, Export and Import Bank, there is NABARD Bank, SIDBI Bank, नेशनल हाउसिंग बैंक. सो ऐसे करके ये सारी बैंकिंग सेक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही हैं. नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. अच्छा, बैंकिंग से संबंधित कुछ चैलेंज भी हमें देखने को मिले. दैट वाज इंद्रधनुष फार्मूला. सो रिवैम्प द पीएसयू बैंक्स. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रिवैम्प करने के लिए लाया गया है इंद्रधनुष. So that was a 7-point program. Okay, after Bimal Jalan committee reports, 7 points program encompassing immediate fund transfer, single holding companies, minimization political interference. So हम देखते हैं इंद्रधनुष प्रोसेस क्या है. It is a 7-point agenda. Appointment done by P.S. Kumar, Consumer Banking Head, Citibank. Then second member was Ravi Venkatesan, the chairman of Microsoft India and board member of Infosys. Third head was Rakesh Sharma, chairman, Lakshmi Vilas Bank. Then these people were taken under the PSU recovery committees. सो PSU बैंक्स की रिकवरी के लिए 7 प्रोग्राम लाए गए, जिसमें फर्स्ट में था कि नए अपॉइंटमेंट किए गए इन 3 पर्सनस का, जय कुमार जी, वेंकटेशन और राकेश शर्मा जी को लाया गया अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू पर्सनस. सेकेंड वाज बैंक बोर्ड ब्यूरो क्रिएशन टू मॉनिटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स फॉर की परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स. थर्ड वाज कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स. गवर्नमेंट टू इन्फ्यूज 25,000 crores into PSU banks, 20,000 crore in a month. सो BBB बन गई, बैंक बोर्ड ब्यूरो. अब क्या किया जा रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक बाय फंड इन्फ्यूजन ऑफ 20,000 to 25,000 crore. फोर्थ क्या हो गया? डी स्ट्रेसिंग ऑफ बैंक्स बाय टेकिंग द स्पीडी प्रोविजन ऑफ अप्रूवल्स. देन फिफ्थ कम्स द एम्पावरमेंट ऑफ द बैंक. और बैंकों को एम्पावर किया जा रहा है by providing them more recruitment of staffs, training and planning in the banking process. Sixth आ गई performance appraisal. So out of 100, 80% stress on the quantity and 20% on quality, stress on performance. Then comes the reforms which assured no political interference and pressure on the banks. पॉलिटिशियंस प्रेशर देते थे कि किसानों को लोन दीजिए या उनके फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो गए हैं उनको लोन दीजिए. सो बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, पंजाब बैंक, जो कि हेडेड बाय पब्लिक सेक्टर वेटरन्स MO रेंगो, किशोर खरत पिराजी एंड उषा अनंत सुब्रमण्यम, उनको भी लाया गया था. तो बैंक बोर्ड ब्यूरो बन गई. थोड़ा सा इसे देखते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या कर रही है. So Bank Boards Bureau becomes a new body of directors as well as the executive chairman, which is a body of eminent professionals and officials which will replace the appointment of board at a whole-time director as well as non-executive chairman of public sector bank, with the board of directors of all PSBs to formulate appointment strategies for their growth and development. So Bank Board Bureau on the recommendation of PJ Naik committee. याद रखेंगे, PJ Naik committee recommended Bank Board Bureau and Shri Bhanu Pratap Sharma as current chairman. So what it facilitate? To recommend the selection of chiefs of the government on owned banks, second, and financial institutions. So government owned banks प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के वर्कर्स को लाने के लिए लिया गया. टू हेल्प द बैंक टू डेवलप द strategies and capital raising plans
Provide recommendations for the appointment to full-time directors as well as the executive chairman of the public sector bank. तो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या कर रहा है, कैपिटल रेजिंग प्लान्स को बढ़ावा दे रहा है। बैंक के जो डायरेक्टर होंगे, उसके एग्जीक्यूटिव चीफ होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए गाइडलाइन जारी कर रहा है। एंड इट इज़ टेकिंग एज द गाइड बैंक टू मर्जर एंड द एक्विजिशन। सो बैंक्स की मर्जर एंड कंसोलिडेशन में भी वर्क करने लगा बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसकी सलाह पे, ऑन इट्स सपोर्ट, ऑन इट्स रिकमेंडेशन ओनली there should be merger and acquisition. So there is improvement in the banking industry. Then we see the Basel norms which are applied in 1988, central banking bodies for the capital adequacy ratio। ये हमने पढ़ा था, capital adequacy ratio tier 1 capital, tier 2 capital upon risk weightage assets। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। बेसल नॉर्म्स स्विट्जरलैंड में बेसल्स की मीटिंग हुई, इसके आधार पे बेसल नॉर्म निर्धारित किए गए। सो रेगुलेशन विद द रिगार्ड ऑफ कैपिटल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, 3 टाइप्स की रिस्क लाएगी। इस पे फोकस करना था, कैपिटल एट रिस्क, मार्केट अंडर रिस्क एंड द ऑपरेशनल रिस्क। So its objective was to ensure that the financial institutions have enough capital to meet obligations and absorb unexpected loss. Okay, now let us see that banking ombudsman क्या होता है। So let us keep it for the next class. CAR हमने पढ़ लिया। Let us see some important questions for your mains examination and for other competitive examination. Explain Nachiket first and Nachiket more committee recommendations। नरसिम्हन मेरे माइंड में चल रहा है। नचिकेत मोर कमिटी रिकमेंडेशंस। अब आंसर राइटिंग्स में मैं बहुत सारी टेक्निक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स को डील करूँगा, कैसे आपको आंसर लिखने हैं। इट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। एक्सप्लेन नरसिम्हन फर्स्ट एंड नरसिम्हन सेकंड recommendations। Explain the Basel norms for CAR। Elaborate Bank Board Bureau। What is Indradhanush reforms in banking? Analyze। So इसी को देखते हैं, आप आंसर कैसे राइट करोगे, हाउ यू राइट अ ब्यूटीफुल आंसर। सो बैंकिंग के क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर कैसे होगा बैंकिंग क्वेश्चन। सो यू विल गिव इंट्रोडक्शन सच एज, देखते हैं इंद्रधनुष या बैंक बोर्ड ब्यूरो। इंद्रधनुष को ही देखते हैं। So to revamp the banks there was इंद्रधनुष procedure। इसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि it works on the 7 points to reform the banking system। Now comes the body, जिसमें आप ऐड करोगे dimensions।
That means problems with the corporates, problem with the NPA, politicians, and unstructured banking body. So it will works. अब सब dimensions में आप डालोगे. Banking bodies, how it was recovered, the 7 points. बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दिया गया. फिर उसमें क्या डाले गए, रिकमेंडेशन डाले गए, मिनिमम कैपिटल को एश्योर किया गया. देन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी प्लान, इस तरह 7 पॉइंट्स को आप लिखोगे. देन थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे. एंड कंक्लूड विथ द फ्यूचरिस्टिक प्लान कि बैंक की कंडीशन कैसे इम्प्रूव हुई. इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ बैंक, how far it led to development of the public sector bank, how far it impacted to PSU and private sector banks. Then concluding beautifully, add futuristic notes, add way forward, and conclude very well, add recent reports also. ठीक है. In this way you are supposed to conclude answer beautifully. And send कहाँ करना है, send it to me t.me/gsrevolt. that is my telegram channel. If you send it, I'll check it out. So आपको रिवोल्ट ला देना है अपनी पढ़ाई से, अपने हार्डवर्क से towards your success. That is your motivation. And if you work hard in a planned and strategic manner through mind maps, memory techniques, previous year question and proper guidance, you will bound to succeed. Okay, be successful. So ending this class here, I conclude this lecture with your futuristic note, and I bet that you should get best out of your future. So thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.